on, Bangladesh remains on the boil over violent clashes by students protesting against quota system for government's job in the country. The government has in fact imposed a curfew and deployed military forces after police failed to quell days of deadly unrest that has spread throughout the country, killing at least 105 people and leaving thousands of others injured. Telecommunications were also disrupted and television news channels went off air in Bangladesh. Meanwhile, Ministry of External Affairs has issued a statement saying that they are in touch with more than 4,000 students in Bangladesh and in fact are providing necessary assistance, while over 900 Indians have been brought back to the country. Soldiers patrolled the streets of Dhaka on Saturday as the army imposed a curfew in Bangladesh. The government wants to quell student-led protests that have become increasingly violent and deadly over recent days. Since Thursday, the country's been cut off from the world. Internet and text messaging services have been shut down. But the demonstrations have continued in spite of a ban on public gatherings. Data from hospitals there shows the clashes have killed over 100 people and injured thousands. And with the death toll climbing, the government imposed the national curfew and deployed the military. Students in the South Asian country are angry about controversial quotas for government jobs. They include setting aside 30% of those jobs for the families of those who fought for independence from Pakistan in 1971. The government had scrapped the quota system in 2018 following similar student protests. But a court reinstated it last month. The state appealed against the reinstatement and the Supreme Court suspended it, pending a hearing in August. The protests have also been fuelled by high unemployment among young people, who make up nearly a fifth of the population. TV channels reported that the curfew was eased for 2 hours on Saturday so people could shop for supplies and get chores done. It will last until 10 a.m. on Sunday, when the government will assess the situation. International rights groups have criticised the internet suspension and the actions of security forces. The European Union has said it is deeply concerned by the violence and deaths. सिचुएशन हम जिस जगह पे वहाँ पे तो ठीक ही है, लेकिन दूसरे जगह पे जहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी में जहाँ पे क्लासेस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशन अच्छा नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी के एरिया में तो सब नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क लगा तो हम आ गए, लेकिन और फिर कल रात से कर्फ्यू भी हो गया तो अभी नहीं थर्सडे नाइट से शायद बंद हुआ था, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो पता नहीं अभी क्या चल रहा है। डर क्या लग रहा था वहाँ पर जो हमारे एरिया तो सेफ ही था, इतना डर नहीं था। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ भी साथ दे रहे थे और हम लोग को रहने के लिए भी वो लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे बोले थे, लेकिन हमको लगा कि पता नहीं सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम वहीं पे मतलब स्टॉक हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग कल रात को आ गए। बांग्लादेश की सरकार को कुछ करना पड़ेगा, उनका अपने घर की समस्या है। जो भी वहाँ पर उत्तेजना पैदा हुई है उसको तो ठीक वही करेंगे ना, उसमें हम तो दखल नहीं दे सकते। अगर वो हमसे, हमारी सरकार से या हमारे देश से कहें कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है तो हम अवश्य वो मदद दें, लेकिन आज तो हम उन्हीं की जो उनके जो सुझाव हैं या उनके जो इशारे हैं, आज तो हमको उन्हीं को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो समझते हैं कि आज वहाँ भारतीय लोग जो वहाँ पढ़ने गए हैं या और किसी काम से गए हैं वो वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हमको उनकी बात माननी पड़ेगी ना। हम तो उनको जाके सुरक्षा नहीं दे सकते हैं।